और इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दीवानी उसका ये डायलॉग है, I'll tweak it a bit and say, भारत का सिनेमा दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। From the time of the father of Indian cinema, Dada Saheb Phalke released the first ever full-length feature film, Raja Harishchandra in 1913, to the first India talkie, Alamzara, produced in 1931. Until the present decade, this industry has a remarkable and rich history of producing a variety of films showcasing different spheres of Indian life, from comedy to romance, from thriller and horror to fantasy or drama, not to forget a rich collection of commercial as well as of the artistic films, as Nawazuddin said. From depicting heroism in war to the winds of change in society through the angry young man, and from love stories to the struggles in the life of a common man through the ages, to the aspiration of the youth who left, longed for the motherland. And looking today, you leap towards the stars with your stories on to Mars. In this beautiful journey, you have inspired and the popularity of digital and OTT platforms has changed how films are created, distributed, and consumed. You could see a poster behind you. तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। उन्होंने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है और उसके बाद ये उनका संबोधन इस वक्त जारी है। 1913 से भारतीय फिल्म के सफ़र को ही वो याद कर रहे हैं और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अहमियत के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो थिएटर्स एंड मूवीज, दिस हैज ब्रॉट तो कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं और यहां पर वो संबोधित कर रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट अंडर द फिल्म नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। एज पार्ट ऑफ दिस ड्राइव 2,200 movies across languages and will be restored to their former glory. And looking to the future, so that the Indian film industry remains ahead of the curve, we have established a task force of the industry leaders to drive the growth of AVGC sector, a value chain which is empowering the cinema of the future. Similarly, we are excited the advent of multiple other technological developments that promise a more immersive cinematic experience for the audiences. I am delighted to announce that today in Cannes, an incentive scheme for audio-visual co-production and shooting of foreign films in India with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000. And in the case of foreign films being shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower in India. These are certain to propel our stories and culture to the audiences from across the world and allow for our culture, societal and informational cross-pollination at a scale and depth that was तो कांस फिल्म फेस्टिवल से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने और यहां पर उनका संबोधन जारी है।
तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या प्लानिंग है, इसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। भारतीय फिल्म के इतिहास को वो याद कर रहे हैं। जो समृद्ध संस्कृति है भारतीय सिनेमा की, उसका भी जिक्र वो फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कांस से आ रही है और वहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, फेस्टिवल को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय पवेलियन का, इंडियन पवेलियन का वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया है। Story of 6,000-year-old civilization, not only the story of 1.3 billion tales, but also the story of human talent, triumph, and the trajectory of new India narrated through your lens. I firmly believe that the India Pavilion is a pantheon for the partnerships amongst the global film fraternity and a panorama of India through its cinematic journey. And finally, before I end, let me emphasize that, led by the Honorable Prime Minister Modi, we are commemorating 75th year of independence and the celebration of the glorious history of our people, culture and achievements, threading together the themes of India's freedom movement. Our glorious heroic freedom tale is etched in the minds and hearts of all Indian citizens. It gives me immense pleasure in being able to stand here at the newly inaugurated India Pavilion as the citizen of such a culturally rich country. India Pavilion is a feather in our cap. Only with your Vishwas and prayas today, it will become the pioneer of the India dream tomorrow. तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे, केंद्रीय मंत्री कांस फिल्म फेस्टिवल को संबोधित करते हुए इंडियन पवेलियन का उन्होंने उद्घाटन किया और वहां पर उनका संबोधन जारी है। भारतीय संस्कृति का भी वो जिक्र कर रहे हैं।